Okay, class. So in the last class, we have covered different types of reactions. We saw displacement reaction, double displacement reaction, endothermic and exothermic reaction. Today, we are going to start with the rate of chemical reaction. Okay, the topic we are going to cover today is rate of chemical reaction. And before we learn the topic, let's try understanding this topic with some examples, with the help of some examples. Okay, so what are we going to understand is what is rate of reaction, what is rate of chemical reaction. Okay, what do you mean by rate? So before we do that, let's see some examples here. So cooking gas starts burning on ignition. Okay, cooking gas starts burning on ignition, the one example. Another is iron article, the iron object. Okay, article means here any object undergoes rusting. Okay, during the time it goes on rusting. Everyone knows that, right? Erosion of rocks takes place to form soil. We know that the rocks broke down. They 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 break down in smaller parts. Stones बनता है धीरे धीरे, उसमें भी ब्रेकिंग होने से क्या होता है, लास्ट में सॉइल में कन्वर्ट होता है, राइट? Then we have alcohol is formed on mixing yeast in glucose solution. ग्लूकोज सोल्यूशन में अगर ईस्ट को मिक्स करते हैं तो एल्कोहल फॉर्म होता है. ओके, वन मोर एग्जांपल. Effervescence is formed on adding baking soda into a test tube containing dilute acid. अगर कोई भी एक dilute acid यहाँ पर लेते हैं तो उसमें अगर बेकिंग सोडा हम मिक्स करते हैं, then it says the effervescence will form. Effervescence here means bubbles, the bubbles. Okay, जैसे आप डिस्प्रिन का ऐड देखते होगे, वहां पर जैसे डिस्प्रिन ऐड करते हैं वाटर में तो बबल्स फॉर्म होते हैं. ओके, सो हियर effervescence means bubble. Okay, now, so in all these examples, okay, so all these examples here, some of them, like we can just observe and we can think of them. So some reactions are completed in short time, बहुत जल्दी हो जाते हैं, और कुछ रिएक्शंस, इनमें से कुछ रिएक्शंस बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं. ओके, दे रिक्वायर लॉन्ग टाइम फॉर कंप्लीशन. ओके, एंड दे ऑकर स्लोली, धीरे धीरे होते रहते हैं. सो इट मीन्स दैट the rate is different for different reactions. It means that the rate is different for different reactions. What do you mean by rate here? तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हमने यहाँ पर की लाइटर से बर्न किया, बर्नर में जैसे हमने गैस को रिलीज किया और बर्नर लाइटर यूज किया, देन इट इज वेरी फास्ट. ओके, दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट. सो दिस इज अ फास्ट प्रोसेस. ये कितना जल्दी जल्दी हो जाता है, फास्ट प्रोसेस. If we say iron article undergoes rusting, and we know that rusting is not a day thing or 2 day thing. Okay, it takes time, it takes days. Okay, so it is a slow process. Rusting is a slow process, right? Similarly, erosion of rocks and conversion of soil, converting into soil. So soil बनने में, you know that it takes millions of years, right? It takes millions, thousands of years. Okay, so it is again a slow process. Here the process is also slow. Effervescence, when we say, जैसे हमने बेकिंग सोडा वहां पर मिलाया, खाने वाला जो सोडा होता है वो मिलाया डाइल्यूट सोडा में, तुरंत बबल्स बाहर आ गए. तो इट्स अ फास्ट प्रोसेस. इट्स अ फास्ट प्रोसेस. आपको ही पता कि अगर हमें अल्कोहल फॉर्म करना है तो ईस्ट जो हमने मिक्स कर दिए हैं, तो सिंगल सेल फंगस जो होता है उसको कहते हैं ईस्ट बोलते हैं. ठीक है, सिंगल सेल जो फंगस होते हैं कि जो शुगर के फर्मेंट शुगर का मतलब एल्कोहल को बनाने के लिए काम आते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये सारी चीजें, तो उन्हें ईस्ट कहते हैं. सिंगल सेल जो हमारे फंगस होते हैं उन्हें ईस्ट कहते हैं, याद रखिएगा. ठीक है, ईस्ट कहते हैं. ये दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, सिंगल सेल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, फंगस फैमिली से आते हैं. these are the microorganisms, they come from the fungus family. Okay, so they are the yeast. Now, so alcohol, अगर fermentation होता है alcohol का, तो it would take days, right? Even the in fermentation of alcohol will also take days. यहाँ पर भी fermentation में days लगे, थोड़ा time लगेगा. It won't be a one day thing. Okay, so again it's a slow process. This is also a slow process. So what do you mean by here?
सिंप्लीफाई, जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड हियर, ओके। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि रेट क्या है, तो रेट क्या होता है, किसी भी स्पीड ऑफ द रिएक्शन। हियर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मींस स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितना फास्ट केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना स्लो हो रहा है, ओके। कितना फास्ट केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर वो स्लो हो रहा है। सो हाउ फास्ट और स्लो a reaction takes place is called as its rate of chemical reaction, its rate of chemical reaction. Is that clear for everyone? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना फास्ट या कितना स्लो हो रहा है, उसे हम केमिकल रिएक्शन का रेट बोलते हैं। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? यस, क्विकली लेट मी नो इफ दैट इज क्लियर। परफेक्ट, ओके। सो यू कैन सी हियर कि जैसे बर्नर तुरंत गैस में हमने बर्न किया, मतलब जैसे लाइटर का यूज किया तो तुरंत स्पार्क बर्न हो गया, तुरंत बर्निंग हो गई, रस्टिंग में टाइम लगा। सो यहाँ पर रेट क्या है, चेंज। तो याद रखना, स्पीड मतलब ऑकरिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद रखिएगा, रेट मींस होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कितना स्पीड से काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ द वर्क, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सो हियर वी कैन से रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अगर मैं बोलूं कि एक आदमी को एक दिन में इतना काम करना होता है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं आपको 4 आदमी देता हूं तो उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे कम टाइम लगेगा, इफ 4 पीपल आर इंक्लूडेड इन दैट। इसका मतलब क्या होता है कि रेट वहां पर बढ़ गया, वहां पर जो जो काम का जो रेट है, जो जल्दी हो पा रहा था, वो बढ़ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज मोर पीपल वर इन्वॉल्व। तो सिमिलरली यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पे, जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन या तो स्लो हो जाएगा या तो फास्ट हो जाएगा, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एंड सो दैट्स व्हाई देयर आर अ फ्यू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ फैक्टर्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन की रेट को कम या ज्यादा कर देते हैं। एंड बिफोर वी गो अहेड, लेट्स जस्ट समराइज हियर। यहाँ पर देख सकते हो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और रिएक्शन रेट is the speed at which reactants are converted into products. In a very simple way, reactants are converted into products. Another example, wood combustion has a high reaction rate since the process is fast. जैसे हम वुड को बर्न करते हैं तुरंत बर्निंग हो जाती है, राइट? इट टेक्स मिनट्स, ओके, जस्ट मिनट्स और मे बी सेकेंड्स ऑल्सो, ओके, टू स्टार्ट द बर्निंग ऑफ द वुड, ओके, कंबशन को स्टार्ट करने में। बट वही रस्टिंग ऑफ आयरन को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज इसकी प्रोसेस क्या है, स्लो है। वुड कंबशन की प्रोसेस क्या है, फास्ट है। तो यू विल से कि जो यहाँ पर रिएक्टेंट है, विच द वुड is more reactive, you can say, like the chemical energy in wood is more reactive than the iron's part, okay? So we can define it like that. And now we come to the factors which affect the chemical reaction. So there are factors जो chemical reaction को slow भी कर सकते हैं और chemical reaction को fast भी कर सकते हैं, okay? So let's see which are those here. So the first one we have is nature of the reactant. नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल में कौन सी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है, कि नट गैस है। वी नो दैट कि मेटल है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा देन नॉन मेटल, राइट? गैस है, इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, तो वो तो रिएक्टिव नहीं होगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, राइट? और मेटल में भी कौन सा मेटल है जो ज्यादा रिएक्टिव हो सकता है, हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव है, पोटेशियम बहुत रिएक्टिव है, सोडियम बहुत रिएक्टिव है देन द गोल्ड और सिल्वर, कॉपर, इनसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, राइट? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। So these are the basic examples like I can give you for nature of reactant. For now we'll learn each one of them one by one, okay? So the second one is size of the particle of the reactant. Size of the particle of the reactant, what do you mean by here, कि जो reactant का जो size है, particles का size है, उससे कैसे, for example अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में सपोज ड्रॉप कर रहे हो, सपोज ड्रॉप किया आपने, उसका पूरा एक बड़ा सा स्टोन ले लिया, बड़ा सा हिस्सा पार्ट ले लिया, ठीक है, एक बिगर स्टोन की तरह ले लिया, उसको आपने ड्रॉप किया वाटर में, तो वो रिएक्ट करना चालू करता है। आप जानते हो हीटिंग होती है, थोड़ा बबल्स फॉर्म होते हैं, फिर वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, राइट? चूना फॉर्म होता है, लाइक स्लैग्ड लाइम फॉर्म होता है, क्विक लाइम से स्लैग्ड लाइम। अब इमेजिन करो अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को वहां पर पाउडर डाला होता तो क्या होता, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा भी हो सकता था, हो सकता कम भी हो सकता है, वी विल सी क्या होता है। बट
अगर हम पाउडर फॉर्म डालेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उसमें कुछ ना कुछ तो ज्यादा चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, बिकॉज वहां पर पार्टिकल्स का साइज चेंज हो गया है, एक बड़े से सॉलिड के फॉर्म में होने से वो पाउडर फॉर्म में आ गए, राइट, बड़ा सा फॉर्म होने से वो पाउडर फॉर्म में आ गए। तो पाउडर फॉर्म में मॉलिक्यूल्स उनके क्या हो गए, सेपरेट ज्यादा हो गए, मॉलिक्यूल्स आर separated in powder form. So we'll see how the reaction changes in change of the size of the particles. Okay, the third one here is concentration of the reactants. Concentration मतलब intensity, कितना ऐसे समझिए मिलावट ना हो, किसी भी रिएक्टेंट में मिलावट ना हो। सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको बोलते हैं हम, HCl जिसको बोलते हैं, ठीक है, HCl। तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, अब इसको हमने बोला था इसके दो फॉर्म होते हैं, एक कंसंट्रेटेड होता है और एक डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें हमने मिक्स कर रखा होता है पानी को, इसको थिन करने के लिए, इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम करने के लिए, क्योंकि हमें पता है अगर HCl गलती से हमारे हाथों में लग गया तो वो बर्निंग हो जाएगी, राइट, हमारी जो स्किन है वो बर्न हो जाएगी, राइट, इट विल बर्न। तो कंसंट्रेटेड को हम डाइल्यूट बना देते हैं, थिन कर देते हैं। तो जब कंसंट्रेटेड होगा तो रिएक्टेंट कैसा होगा, मतलब कि रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी या स्लो होगी, या फिर डाइल्यूट होगा जब थिन होगा तो कैसी रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी। So are we getting here somewhat what are we learning the factors affecting the rate of the chemical reaction? अभी हम इनको deeply one by one brief में थोड़ा brief में पढ़ेंगे, but for now I'm just giving you here an introduction of each one of them. So are you getting somewhat like what are we going to learn in today's class? Are you getting in some way? Okay, perfect. That's great. Now let's go ahead. And two more we have here is the temperature of the reaction and the catalyst. Okay, the temperature of the reaction and catalyst. So temperature in the sense कैसा है कि अगर हम हीटिंग कर दें, टेम्परेचर इन द सेंस हीटिंग अगर करते हैं तो क्या रिएक्शन फास्ट आएगी, स्लो हो जाएगी। और एक कैटलिस्ट होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसके आने से क्या होता है, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई okay, so we are going to watch the video of sodium reaction of potassium with water and sodium reaction of sodium with water. Yes, Spark Ajit. Okay, so as I said, potassium is more reactive than sodium. Okay, potassium is more reactive than sodium here. Potassium is more highly reactive than sodium here. So let's see how the reaction looks like. Okay, I think this is not the one I wanted to share. Sorry, just give me a second. I'll share the another screen here. This is not the one I wanted to share. Where is that video? Okay, it's here. It's here. I got it. Factors. I think I got it. Yeah. Let me know if you can hear the sound clearly. Okay. So I'm playing it now, and make sure you are able to hear it clearly. Okay. Can I play it now? Yeah, quickly. Ready? Can everyone see the screen so I can play it? Yes. Okay, great. Just keep yourself muted, okay? When it is playing only, then it is. Otherwise, you can speak, okay? Great. Containing water. Put a piece of sodium, light yellow colored solid, in a trough of water. It reacts vigorously, wandering in the water and disappears after some time. For example, 1 minute. It has said कि अगर हमने सोडियम को वाटर में ड्रॉप किया है तो वहां पर व्हाइट लाइट मतलब बाहर आता है, एंड इट वाटर में घूमता रहता है, मतलब वही रिएक्शन होती है जो आपने बोला ना कि चिंगारी, किसी ने बोला स्पार्क, किसी ने बोला कि थोड़ा कैचेस फायर टाइप का दिखता है। सो यस, बिकॉज लाइक दैट ओनली, ओके, एंड देन इट डिसअपियर्स इन सम टाइम, फॉर एग्जांपल 1 minute. 2Na sodium plus 2H2O water gives 2NaOH sodium hydroxide plus H2 hydrogen. Take a trough
containing water. Now with the potassium, Put a piece of potassium, light pink colored solid, you can in see a more trough reaction of here. water. Potassium reacts more vigorously than sodium and disappears after some time. For example, half a minute. मतलब सोडियम पोटेशियम जल्दी से रिएक्ट करता है देन सोडियम, सो इसको डिसअपियर होने में कम टाइम लगता है देन द सोडियम. ओके, सोडियम टेक्स मोर टाइम देन इन डिसअपियरिंग, मतलब कि वाटर से रिएक्ट करते करते वो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है. ठीक है, 2K potassium plus 2H2O water gives 2KOH, potassium hydroxide plus H2 hydrogen. Effect of concentration. okay, so that is for this part here. Okay, yeah, so if you could understood, if you could like if you could understand, so what did it say, that potassium is more reactive than water, it takes less time in disappearing than the sodium. Okay, potassium is more reactive than sodium in water, and potassium took less time in disappearing than water, and the color of the the flame, the light you saw was like the particles, light pink color in potassium and yellow, light yellow color in sodium. Okay, so if you could get that, so that way that is the nature of the reactant. For simple example क्या है कि nature of reactant में क्या होता है कि यहाँ पर जो मतलब कि डिपेंड करता है कि मेटल है कि नॉन मेटल है. नॉन मेटल है तो थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है, मेटल्स है तो मोर रिएक्टिव होता है. मेटल्स में भी अगर दोनों मेटल है तो उसके देखा जाता है कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उस पर डिपेंड करता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो उतना ही क्या होगा, रिएक्टिव होगा. ओके, सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट, please let me know in the chat box quickly, then we'll go ahead. Quickly let me know if you got that. Yes. Okay, thank you Ajit, perfect. For the others, like the next, the size of the particle of the reactants, concentration of the reactants, and temperature of the reaction, and the last catalyst. So you're gonna watch a video for that, and I have found this video okay, and this is quite interesting, and I think because this shows the visualization part which will help you in understanding more clearly. Okay, so I'm going, just give me a second, I'll quickly share that video and we'll watch that together and understand it clearly. Okay, so give me a second, I'll quickly set that up. Start it now. Listen it carefully and watch it carefully. To understand the influence of size of particles of reactants, let us perform an activity. Activity. First, let us take 2 test tubes. Let us take pieces and powder of Shahabad tile in equal weights. Okay, here I will clarify that is Shahabad tile, or you can say marble, okay, or you can say calcium chloride. In the last class you understood जो marble tiles होती हैं, जो marbles होते हैं, right, वो किसका बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, CaCO3 से ही बनता है. ठीक है, that is also made up of CaCO3 only. Okay, so just be I think no, this one I don't want to share. Okay, yeah, तो just be so यहाँ पर समझना कि Shahabad tiles is nothing but what, your marbles only, or calcium chloride, CaCO3. Okay, I'll play it now again. Now add 10 ml of dilute hydrochloric acid in each of the test tubes. What do you observe? It is seen that the effervescence of carbon dioxide is formed. Now add 10 ml of dilute hydrochloric acid in each of the test tubes.
What do you observe? It is seen that the effervescence of carbon dioxide is formed slowly with the pieces of Shahabad tiles, while the effervescence of carbon dioxide is formed at a faster speed with the powder. The reaction of pieces of Shahabad is slow as what has happened here? What has happened here? कि यहाँ पर की जो यहाँ पर साबाद टाइल्स के जो ये वाले पार्ट्स थे, these were the bigger ones, okay? These were the bigger ones. The particles were bigger only, okay? And यहाँ पर हमने किस particles को किस form में रखा? Powder के form में रखा. We kept these in powder form, okay? We kept these in powder form. So the reaction, the rate of reaction, you can see here. Compared to the reaction with the powder. This observation indicates that the rate of a reaction depends upon the size of the particles of the reactants taking part in the reaction. Smaller the size of the reactant particles, higher is the rate of the reaction. Okay, so this was about size of the particles of the reaction, जहाँ पर ये बताया गया कि if the reactant is in powder form, then the reaction rate of reaction, the speed of the reaction is faster than the reactants if the reactants are in larger size, okay, larger size particles, okay. The next one is concentration of the reactants. Concentration, I told you about concentration. Concentration in terms of concentration in terms of dilute and concentrated. Dilute मतलब thin कर देना उसको, मिलावट करके उसमें कुछ mix करके, and concentrate मतलब उसकी intensity ज़्यादा हो रहा है तो क्या होता है कि rate of reaction कैसे affect होता है, ठीक है? So let's watch that now. Concentration of the reactants. Let us consider the reaction of dilute and concentrated hydrochloric acid with calcium carbonate powder to understand the effect of concentration of reactants. Dilute hydrochloric acid reacts slowly with calcium carbonate, and calcium carbonate disappears slowly with the slow liberation of carbon dioxide. On the other hand, the reaction with concentrated hydrochloric acid takes place rapidly and calcium carbonate disappears fast. The reaction with concentrated hydrochloric acid is faster than with dilute hydrochloric acid. This means that the rate of a reaction is proportional to the concentration of the reactants. Temperature of the reactant. Okay. So you saw that कि यहाँ पर कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर जब मिक्स किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, तो जब मतलब कि अगर कंसंट्रेटेड है, ज्यादा डेंसिटी का है, हाई इंटेंस है, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट तुरंत डिसअपियर होता है, राइट? और अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में है, थिन है, मतलब उसमें मतलब कि कुछ मिक्स कर गया है, वाटर मिक्स कर गया है, डाइल्यूट फॉर्म में बनाया गया उसे, देन द कैल्शियम कार्बोनेट लाइक CO2 लिबरेट्स, मतलब कि वहां पर डिसअपियर नहीं होता है और CO2, ठीक है? So concentrated as the conclusion is concentrated acid reacts faster than the dilute acid, और इसका मतलब rate of reaction is proportional to the concentration of the reactant. मतलब कि rate of reaction ज्यादा होगी अगर concentration reactant का ज्यादा है, rate of reaction कम होगी अगर concentration reactant का कम है तो, okay. Next one is temperature of the reaction. What happens if the temperature of the if the heating takes place or if the cooling takes place? Okay, so what happens in the temperature of the how temperature affects the rate of reaction here? While determining the rate of a reaction, temperature of the reaction is a very important factor. To understand this aspect, let us recall one activity. We have seen that before heating the limestone, the lime water does not turn milky. But when limestone is heated, the lime water turns milky. What must be the reason behind this? Before heating the limestone, the rate of the reaction is 0. When limestone is heated, the rate of the reaction increases and carbon dioxide is liberated, making the lime. Why is that? Why? How the carbon dioxide is liberating here? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या हो गई, लाइटर होते हैं. जब टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी, जैसे एयर हो, कोई भी पार्ट हो, टेम्परेचर इंक्रीजेस, सो मॉलिक्यूल्स गेट लाइटर, वो हल्के हो जाते हैं, तो उनका मूवमेंट बढ़ता है, दे गो लाइक दे मूव फास्टर.
तो जब फास्टर दे मूव करते हैं तो उनका जो मतलब कि जैसे यहाँ पर बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है, तो यस यहाँ पर गैस जो बन रही है उसके मूवमेंट की वजह से यहाँ पर जो गैस जल्दी बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी बाहर आ गया, लिबरेट हो गया। तो वहां पर क्या हुआ कि उसके बनने से क्या होता है, वो उसके जो बनने से क्या होता है, वो रिएक्शन की वजह से उसमें लाइम वाटर जो क्या दिखाई देता है, मिल्की दिखाई देता है। सो व्हाइट लाइम वाटर वी कैन सी। ओके, I'll play it Lime now. water turn milky. From this, we understand that the rate of the reaction depends upon temperature. When temperature is increased, the rate of the reaction increases. Okay, before I go and play this, I would want to take some doubts here. If we have any doubt, okay, let's see in the chat box if we have any doubt. Okay, about all of these, and then we can go ahead. भैया Yes, Ajit. भैया लिबरेशन मतलब Hello. भैया Yes, yes, Ajit. लिबरेटेड मतलब अरे यहाँ पर रिलीज होना है, नथिंग एल्स। ओके मतलब कि we free something, okay, we make we you know, we get something, or you can say like to we are allowed something to get free. Yeah, clear? Next यस doubt. Do we have any other doubt? Ajay is just showing thumbs up. Maybe he's clear with everything. Lakshmi is asking. Okay, Lakshmi is saying size wala part it can be explained. Okay, Lakshmi, I will share the recording and you can watch it again. Then you can reach out to me if you have any other doubt. So size we were discussing. अगर size बड़ा है particle का, थोड़ा सा ज्यादा size का है, तो it takes suppose you take you know पाउडर, सपोज जस्ट सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, शुगर का एग्जांपल लेते हैं, शुगर और वाटर को मिक्स करना है, कंपाउंड बनेगा, ठीक है, उसमें एक मिक्सचर बन के आएगा जिसको आप शरबत बोलते हो, ठीक है, द स्वीट वाटर जो भी, ठीक है। तो वहां पर शुगर अगर बड़े साइज पार्टिकल्स पे है तो इट विल टेक मोर टाइम टू डिसॉल्व इन इट, राइट, इट विल टेक मोर टाइम टू डिसॉल्व इन इट। और इफ द शुगर इज इन powder form, then it will take less time to dissolve in it. Okay, if the sugar is in powder form, then it will take less time to dissolve in it. So similarly it was saying कि अगर हम साबा टाइल्स लेते हैं, मार्बल्स लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और उसको हम टेस्ट ट्यूब में रखते हैं सेम अमाउंट में, एक साइज ज्यादा बड़े साइज के मार्बल्स हैं और एक साइज पाउडर फॉर्म का मार्बल है। ओके, मार्बल इज इन पाउडर फॉर्म एंड देन वी 10 ml डायलूट मतलब कि HCl अगर हम जब दोनों में रिलीज करते हैं तो वहां पर कि जो एफरवेसेंस है, हम देखते हैं कि बबल्स किसमें जल्दी फॉर्म होने लगते हैं। तो आपको पता कि जब जो बड़े साइज पार्टिकल्स में है उसमें इट विल टेक मोर टाइम फॉर दैट टू डिसॉल्व फर्स्ट एंड देन द बबल्स विल बी फॉर्म्ड, और जो पाउडर फॉर्म है इट विल बी डिसॉल्व फर्स्ट क्विकली एंड द बबल्स विल फॉर्म फास्टर। ओके, तो यहाँ पे वी कैन से कि size the rate of reaction is directly proportional to the size of the particles. Smaller the size of the reactant particle, higher is the inversely proportional to the rate of reaction here. Okay, the size of particle is inversely proportional to rate of reaction, मतलब कि और rate of reaction is inversely proportional to size of the particle. Smaller parts होंगे, powder form में होगा तो ज्यादा higher the rate of reaction, और if the larger the size of the particles, slower the rate of the reaction. Okay, so is that clear, guys? Anyone else has any doubt? So we can take that and then we go ahead with the catalyst. Does anyone else has any doubt? Aditya is saying no doubt. Okay, anyone else? I'm going to upload this video on the channel as well. You can watch it. I have so told you that this is going to be unlisted. You can open it with the link only that I will provide to everyone. Okay, so you will be able to open through the link only. Okay, great. Let's go ahead and watch the catalyst part as well and get this completely clear. Okay, so we will watch the catalyst part now. So before I start the catalyst part, I want to explain you this. Catalyst is something, एक suppose करो catalyst is something
कि जहां पर जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, रिएक्शन को फास्ट कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट चेंज कर सकता है, मतलब इट कैन मेक इट फास्टर, इट कैन मेक इट स्लोअर, ओके, विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन। मतलब कैटलिस्ट चेंज नहीं होगा, कैटलिस्ट जैसा है वैसा ही रहेगा, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। आपको याद रखना, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं निकलेगा, ना ही वो रिएक्टेंट के फॉर्म में दिखेगा, बट वो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है। एंड दैट सब्सटेंस और दैट एलिमेंट और दैट कंपाउंड, कुछ भी ऐसा जो भी हम यूज करेंगे और कोई प्रोसेस, दैट कैन बी द कैटलिस्ट। क्या है काम? the substance in whose presence the rate of chemical reaction changes without causing any chemical change। मतलब कि कैटलिस्ट जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बाकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्टर या स्लोअर हो जाएगी। ठीक है, so let's watch it। Catalyst. On heating potassium chlorate, it decomposes slowly. The rate of this reaction cannot be increased by reducing the particle size or by increasing the temperature. However, potassium chlorate decomposes rapidly in the presence of... So यहाँ पर कहने का मतलब क्या था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि पोटेशियम क्लोरेट जो है 2KClO3 है, तो वो डिकम्पोज, वो ब्रेक होता है, मतलब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि ब्रेक होगा दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में, ठीक है, प्रोडक्ट्स में, तो वो डिकम्पोज स्लोली होता है। अगर हम उसको हीट भी करते हैं या फिर हम उसे हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तब भी उसका मतलब करने से उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, या फिर हम साइज भी उसका छोटा करते हैं तब भी उतना ही स्लो होता है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर ये बोलना जा रहा है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड अगर मिक्स करते हैं उसमें तो क्या चेंजेस आते हैं? of manganese dioxide, that is MnO2, and liberates oxygen gas. Temperature. Okay. The rate of this reaction cannot be increased by reducing the particle size or by increasing the temperature. However, potassium chlorate decomposes rapidly in the presence of manganese dioxide, that is MnO2, and liberates oxygen gas. In this reaction, no chemical change takes place in MnO2. Such a substance is called a catalyst. The substance in whose presence the rate of a chemical reaction changes without causing any chemical change to it is called a catalyst. For example, we know that hydrogen peroxide decomposes into water and oxygen. This reaction takes place at a very slow rate. But the same reaction takes place at a faster rate on adding manganese dioxide, that is MnO2 powder, in it. There are... Okay, so you can write this chemical reaction if you want to write this, and I hope you got it. Quickly let me know in the chat box if you have understood, and I'm going to give you some daily life examples so you can get it completely clear. Okay, थोड़ा सा आपको help हो जाएगी. So yes, quickly let me know if you have understood it. Anything, if you have any doubt in the chat box, and then I'm going to give you some daily life examples related to the catalyst. Yes, guys. Yes, anyone? Any doubt? Ajay Singh, Vanaspati ghee is different product that comes out from the vegetables, oil, and H2. Ajay, I will have to see and let you know. Sure. Akash is saying catalyst again. So, okay, I'll just play it quickly again here, and hopefully that helps. On heating potassium chlorate, it decomposes slowly. The rate of this reaction cannot be increased by reducing the particle size or by increasing the temperature. However, potassium chlorate decomposes rapidly in the presence of manganese dioxide, that is MnO2, and liberates oxygen gas. In this reaction, no chemical change takes place in MnO2. Such a substance is called a catalyst. The substance in whose presence the rate of a chemical reaction changes without causing any chemical change to it is called a catalyst. For example,
We know that hydrogen peroxide decomposes into water and oxygen. This reaction takes place at a very slow rate. But the same reaction takes place at a faster rate on adding manganese dioxide, that is MnO2 powder, in it. There are... Okay, so here again, yes. Let me know if you have any doubt, and then I'll take some examples. Yes, guys. Anyone? I'll quickly go back to the PPT and I will take some examples there. Let me see if you have any examples here. Sorry, doubts, or if anyone have understood, if they have any examples to share here. Anyone? It can lower the rate of reaction or it can increase the rate of reaction. Okay, so the example I'm going to take here to make you all clear with this are, like, let's say biochemical examples, some of the biochemical examples here. Okay, some of the biochemical examples here are like enzymes in our body. Okay, enzymes क्या करते हैं यहाँ पर, like you know, proteins जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं. यू नो दैट जो बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट है वो प्रेजेंट ही है, दे डोंट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, बट एंजाइम के थ्रू क्या होता है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है, हमारा डाइजेशन प्रॉपरली होता है, राइट, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. और you know that some has the higher metabolism rate, some of the lower metabolism rate, so that also depend on the enzymes and the proteins that we have in our body. Okay, and they do not take part, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, बट जो हमारा रिएक्टेंट था, जो हमने खाया था, उसका जो डाइजेशन प्रोडक्ट बना, उसका जो रिएक्शन होता है वो फास्ट हो जाता है, एंड देन वी कॉल इट द हाई मेटाबॉलिज्म रेट. किसका ज्यादा है तो उसका डाइजेशन जल्दी हो जाता है, वो ज्यादा जल्दी से पचा लेते हैं. ओके, अदर एग्जांपल्स, हमारा डिटर्जेंट पाउडर देखा, डिटर्जेंट पाउडर, उसका काम क्या होता है, डिटर्जेंट पाउडर का काम क्या होता है कि वो कपड़ों में कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं, राइट, ना ही उसके जो रिएक्टेंट है, जो भी उसमें दाग लगे हुए हैं, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन वो साफ हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द डिटर्जेंट. एंड यू कैन सी द, जो आपको वहां पर जो बाहर आता है तो आपका पानी गंदा हो जाता है, तो मतलब रिएक्टेंट अभी भी जो दाग था, जो उसमें सपोज करो जो सॉइल थी, मिट्टी थी, उसमें जो दाग था, वो अभी आपको पानी, गंदे पानी दिखेगा. तो यहाँ पर वो डिजोल्व नहीं, मतलब कि वो खत्म नहीं हो गया है यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर यूज करने से. डिटर्जेंट पाउडर यूज एज एन कैटलिस्ट हियर, क्योंकि वो उसमें, अगर हम डिटर्जेंट पाउडर यूज नहीं करेंगे तो हमारा दाग को छुटाना, वो जो दाग है, जो स्टेन है, उसको हटाने में हमें टाइम लगेगा, राइट, उसको हटाने में हमें टाइम लगेगा, राइट. बट if we use the detergent, then it just removes it. Okay, it just removes the stain from the cloth. Okay, so that's why we can say the, you know, detergent is a catalyst there. Yes, guys, so did you get this example? Are we clear with the example now? Are we have like, you know, somewhat good understanding of the catalyst here? One more example we can take here is कि वेजिटेबल ऑयल जो होता है, वेजिटेबल मतलब जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, ओके, जो हमारे वेजिटेबल्स होती हैं, वो ऑयल में जल्दी पकती हैं देन द वाटर. दे, you know, vegetables cook quickly on oil than on water, क्योंकि उसमें भी एक कैटलिस्ट, मतलब ऑयल की जो प्रॉपर्टी उसके थ्रू होता है, राइट. So that is also an example of it. Okay, so here we like we have completed all the factors affecting the rate of the chemical reactions here.